presentation here. Thank you, brother. Yes. All right. Thank you, Mr. V. So, welcome everybody. Welcome everybody for joining our session for today. So, I'm Jason here. All right. So, from CaryPact, I'll be doing the presentation today, and I'll be seeing you guys in Bangkok office, right, to meet with our company CEO. So, now talking about CaryPact, right? So it's a decentralized supercomputing protocol based on the BOT chain or boot chain, yeah? So this boot chain is our own public chain. So that's the most exciting part in our presentation and in CaryPact today is we have created our own boot chain, okay, which is our own public chain. And the first project that we're going to start on our public chain will be CaryPact, all right? So this is something very interesting, okay, for me to share today. So let's go to the detail. So in today's presentation, I'll be covering 6 content or 6 aspects. First will be the public chain itself, and to talk a little bit about what is public chain is all about. And then we'll go into the blockchain in history. Then we'll go into public chain advantage, which is our BOT advantages. Then we'll be talking about the tokenomics. We have 2 total tokens over here. Yeah, one is the platform token that we call as CaryPact, which will be CA, and we also have our own public chain token, which is BOT. All right, and then we will be talking about the marketing plan, which is the passive income and also the active income. And then last but not least, we will talk about the risk assessment when come to the business project that we're going to select. All right. Now let's talk about the public chain first. First, we need to understand what is public chain. Public chain is basically example of Solana, Binance, Ethereum, okay, Bitcoin. These all are the public chain, whereby when you do a transaction, you will be using their gas fees as their native token. So that is a public chain. All right. So and another thing is how to identify a company is a public chain. They will have their own explorer to check their transaction ID. Okay, like Binance, they have BAC, right? And for Tron, they have Tron.org, correct? To check their transaction ID. So this is the meaning of public chain. And BOT is one of the public chain. So we will be using transactions using our BOT as a gas fee, all right? And as we know, on the public chain history, all right, every 100x, 1000x, 10x is all been created from public chain token. Like example, Ethereum, Solana, and BNB. I believe you guys already know that, right? So now the new chain, a new public chain have come out in 2026, which is the BOT chain. And that is our own public chain. And that's what I'm going to talk about today over here. Okay. Now, before I go in detail, let's talk about a little bit history on the blockchain itself and how it started. Okay. 1.0 is the Bitcoin era, whereby it's a public ledger and it's a decentralized. But you can't create a project or platform in the ledger or the networking of BTC, correct? So we have created Ethereum, which is the smart contract revolution on the 2.0, correct? And under the Ethereum smart contract, we have created a lot of projects, MLMs, ROI platforms, all right? We also have BV token, NFT, GameFi, SocialFi, and also Metaverse, correct? And Ethereum is still the ecological king in the blockchain industry itself. But the only one problem with Ethereum is the speed is slow, all right? And the gas fees is very high. Now, let me give you an example of a Shiba Inu. I believe most of you all have bought the Shiba Inu in the smart contract of Ethereum when it was newly launched. Okay, can you imagine buying for $100, but the gas fees is around $120? So it's crazy, right? So that's what happened with Ethereum. And then come with the 3.0 revolution, whereby we have Solana, all right? So Solana was always targeting about speed, okay? So for anything, any programmers who are developing their project under Solana, they were promoting that the ecosystem have the speed transaction fastest in the blockchain industry itself. Then we have BNB, TRX, and Matic for lower gas fees. So this is their selling point. You see, every public chain have their unique selling point, okay? Like for Solana, it's the speed. For BNB, TRX, and Matic was the lower gas fees. And for Polkadot, it was the cross-chain. That means regardless of you from which public chain, I can do cross-chain. Okay, you can send
token from Ethereum to Solana, from Ethereum to Binance, and from Ethereum to Matic, doesn't matter. So that's what Polkadot was promoting on their selling point. Then we had the Uniswap. Okay, Uniswap come up with their DEX, which is decentralized exchange, which you can swap the token with liquidity in the exchanger itself, right? So all these tokens on the public chain, if you see example over here, within 2 years from the day they will be launched, they already went to the climax or to the peak. So they have made like 10x, some even make 100x, some even make 1000x. So what I'm trying to say to you is, when a new public chain is born in the blockchain industry, that's where we need to take the opportunity to make big money in that particular coin, all right? So now BOT is coming in as an example in 2026, and it's not yet even started, yeah? The launching is happening on the 15th of March. You guys are going to be the first pioneer group to hear about it and to become the first one to join itself. So that's what I'm saying. The launching is happening on the 15th of March, and you are still in the pioneer stage to join and on board with us in CaryPact and also BootChain. All right? Now, talking about the 4.0 revolution over here, in BootChain, what's so special in our public chain? We have the content of all the other public chains facilities in ourselves. So we have the fastest speed, we have the lowest gas fees, we have the cross-chain, and we also have the DEX. All right? But only by having these things, it still doesn't make us to be unique, because other chains already have it and they have been in the market quite some time, and the trust on the programmer will be very high with them. All right. So now, how can BootChain attract those programmers to come and build projects in our public chain? So now we have, let me introduce the special features that we have in BootChain. First is the Magic Block AI. Okay, this is something very unique that other public chain doesn't have. We have it. Okay, by using our Boot AI, we will be creating a project, all right, in our platform within 30 minutes. So that means, can you imagine a programmer who are doing a proposal to the boss, like to create a project, it will take about programming about 3 weeks to 1 month, correct? Or maybe 2 months, all right? But with us in our BootChain, with our Magic Block AI, within 30 minutes, you can debug and also program a full project coding within 30 minutes. So with this special system that we're having, do you think the programmers is going to go out and do their chain in other platform? No. Definitely they're going to attract to BootChain, correct? And not only that, whatever gas fees that the company is collecting, BootChain is collecting in the ecosystem that they're creating, 80% of the gas fees will be returned back to the programmers. All right. So since all the program in the market are all open source, so the programmer can pick and choose what style of programming they wanted, what type of coding they wanted. They can plug together and debug the system within 30 minutes with our BootChain. All right. And what we are doing here is we are targeting all the programmers. Can you imagine when we have more than 10 programmers who are creating their project in our BootChain, how many thousands of users are we attracting to our BootChain? So it's going to be more than 100,000 users that they're joining in our BootChain. By that, they'll be utilizing the gas fees in BOT token. And what will happen to the token of the BOT? Definitely it's going to go up. Same like what happened to BNB, Solana, and also Ethereum, right? Now, talking about the BootChain, right? So the total supply of the BootChain is 150 million. And in order to mine the entire 150 million will take approximately 25 years, all right? And the initial price of the BOT that's going to be launching soon will be $5 to $7 range, okay? And out of these tokenomics, 150 million, 70% will be going out to the mining output, and the remaining 30% will be for the institutional investors, ecosystem development, airdrops, and also operation and tech team, all right? Now, since the BootChain is fully focusing on the programmer part, so now what are we doing here in this Zoom today? Okay, we are here to make money, correct? So, CaryPact will be the benchmark ecology project in the BootChain. It will be the first benchmark, okay, that will be ever created in our own BootChain, and we are going to be investing our money in CaryPact,
Okay, so this will be the first ecosystem that we create in the boot chain itself. We have the total supply of CA, which is CaryPact, around 210 million tokens. Out of this 210 million, 10 million will be used to do the initial swap to buy the computing power with USDT, and the remaining 200 million will be going into the computing power itself. Okay, from this breakdown of the tokenomics, as you can see here, every day the company will be releasing, mining 40,000 tokens, for the first 2 years. What happened after 2 years? Every 2 years, the daily mining will be reducing by 10%, and then you will take time about 22 years for you to mine and complete the CaryPact token, all right? So from the 40,000 token, 42% will be going to the hash rate mining, which is 16,800. Another 18% will be going to the POS output, which is the staking. All right, these two is the passive income that we can do in our investment. Yeah, so there's about 7,200 CA token that will be allocated on a daily basis, and 35% will be for the dynamic reward pool, which is the active income. So we have two parts in active income, and that comes to 14,000 CA token per day. And we have the 3% for the DAO community, which is allocated 1,200 CA token per day, and 2% is for the foundation, which will be given on a daily basis 800 CA token to the foundation. Now let's move into the first initial and the important part of the presentation today is how do I participate? So if I participate, how much will I get? How long will I to get my money? All right. The moment you join our computing power in CA, your money is automatically burned and be converted into computing power. So the only way for you to make money in order to get your capital plus your profit will be based on your daily CA that's coming out from the computing power. All right. So the initial price of CA that will be launching will be $4 per token. Now, how can we calculate in terms of how much am I making a day is, let's put a simple calculation. Please, you guys all can take your calculator. All right, so this is the formula. So $1 is equivalent to 1 hash rate. So example, today you join $10,000. I'm just giving some example, $10,000, you will be divided by the total network of the company. In this case now, we're having the node account selling, which is ongoing, and we already have locked almost about $8.5 million worth of node account selling. So the total hash rate for now is 8.5 million in total. So 10,000 divided by 8.5 million times with 16,800. That means per day you will be getting somewhere around 19.76 CA. So this 19.76 CA, if you times with $4, it's about $80 per day that we'll be collecting. All right. So bear in mind that will be for the first day, and then the second day, the total network hash rate will be increasing because a lot of people will be depositing. All right. So the moment a lot of people are depositing and you are still maintaining your 10,000, so your CA will be dropping little by little on a daily basis. But bear in mind, your return of investment will be for 22 years. All right. So as long as the computing power is keep on mining, you will be still getting your CA token. All right. So that's on the first income that you will be earning as a passive. All right. Now, second income as a passive, you didn't want to withdraw the CA. You want to accumulate more CA. What you can do is you can claim the CA that you're earning from the mining, and then you can stack it in our mining pool, in our stacking pool. All right. So whereby the stacking, you'll be getting up to 1% for doing the stacking on a daily basis. All right. So in the stacking pool, the system will be automatically compounding if you didn't want to withdraw. All right. And you can get up to maximum 1%. So the 1% is from the CA that you're getting on a daily basis on your mining status. All right. So the CA that you're getting, some will be asking, where can I exchange the CA? All right. You can exchange the CA in our DEX. Remember, I mentioned to you, we have 10 million tokens which we keep for swapping in the initial DEX. All right. So you can swap the CA in our DEX, DEX, Decentralized Exchange. All right. And you will be getting BOT token. All right. The BOT token
you can go into our exchanges to exchange to USDT. So BOT will be going into mainstream top exchanges down the road on starting from June to December this year in the top 10 to 20 top tier exchanges. Right? So this is what the company has projected. And each time when you swap the CA to BOT token, there will be a charges of 5%. And that 5%, 1.8 will be going to the liquidity reflow into the stacking pool, all right, which will be going over here. And the remaining 3.2% will be going to the node account holders and also the DAO community holders, all right? So I believe I've explained on the passive income. Now, the second income that I'm going to talk about is the active income. So how the active income is calculated is based on your weaker leg, all right? Your total weaker leg divided by company's total weaker leg and times with 7,000 CA. I mean 7,000 CaryPact token, which is allocated on a daily basis, yeah? So let's say in this case now you have 4 different lines or 4 different legs. One leg you have 10,000 sales and the remaining 3 legs you have each 2,000 sales. So that means your weaker leg become 6,000. So the system will take 6,000 divided by the company's total weaker leg. Let's say for the starting is 1 million. All right, just an example, yeah? And times with 7,000 CA that being produced daily. So you will be getting approximately 42 CA per day, okay, as doing your networking. So 42 times with $4 per CA is around $168. All right. So this is how you calculate your commission. And for rules is you must have minimum 3,000 USD on weaker leg sales in order to achieve this income. Okay. Now the second income for active will be the ranking bonus, which they allocate another 7,000 CA over here. So in order for you to become V1, your personal stacking must be minimum $500 and your weaker leg must be more than $10,000. And then you will get the 30% pool sharing in the V1. Okay. So 30% of the pool sharing will be 2,100. So how am I getting the 2,100 CA? It's from the CA over here, 7,000 times with 30%, you will be getting 2,100 CA. So whoever qualified in the V1 ranking, okay, if let's say there's about 100 people qualified for the V1 ranking, so 2,100 divided by 100. So each of you will be getting 21 CA token per day. But what happens in the next day, there's about 200 people already qualified in the V1. Then the 2,100 divided by 200. So each of you will be getting 10.5 CA per day. So that's how the system is being calculated. And for you to go up to V2, your personal stacking must be 1,000 and your weaker leg or smaller leg team total sales must be more than $30,000 and you will enjoy 10% from the V2 pool. So 10% of 7,000 is 700. So can you imagine 700 divided by maybe around 50 people qualifying in V2? Okay, then each of you will be getting 14 CA token. So the best thing over here in the ranking bonus is the moment you go up to V2, you can earn V1 commission bonus as well and V2 bonus as well. All right, so you will get 2 bonus over here. So if you go up to V6, same thing. You will be earning from V1, V2, V3, V4, V5, and V6. All right. So if you have same under your group members who are in the same ranking, doesn't matter. They also will be earning equally with you in this pool, and you also will be earning equally in the pool itself. All right. For V8 to V10, there's a special requirement. Your personal stacking must be more than 10,000, and your weaker leg you must have 2 different lines who already achieved V7 title, and for V9 you need to have 2 V8 under 2 different teams on your weaker leg, and your personal stacking must be more than 15,000. And for V10, your personal stacking must be more than $20,000, and you need to have 2 V9 and 2 different legs minimum in order to earn the additional 5% from the DAO thing. Yeah, so 5% from the 700 is around 350. So normally in V10, maybe about 5 people, less than 5 people will be qualifying, and you guys can take the piece of cake even bigger on the CA. So all the payout will be paid in CA, which later you can go back to the DAX to convert the CA to BOT token, and BOT token that you're getting, you can convert back to USDT in our exchanges. All right. Now,
we're coming to another important part, which is the node benefit account. So this node benefit account was actually been stopped last month on 25th of February. But because of the requests from different leaders from different parts of the world, we already have more than 40 country leaders who have traveled to our Bangkok office to visit the company CEO, Mr. Jensen Chow. All right. So Mr. CEO is actually the owner of a coin store exchange in Singapore. Yeah. So that is our company owner of CaryPact. So they have the belief in the node account, and the node account also is selling very hot. Is because compared to other platforms, right? The node account when you purchase is nothing to do with your own investment. Whereas in CaryPact, the moment you buy a node account, $1,000, it automatically contributes the 1,100% to your cloud computing. All right, that means you will get the CA, which will be producing on a daily basis. Okay, but for now, this promotion, which was the February promotion, has been extended up to 14th of March. Okay, you heard it right, guys. It's been extended up to 14th of March. That means when you put $1,000, you get 1,100, which will be automatically convert into computing power and produce CA on for you daily. Plus, they also give you 20 BOT token for free. So the 20 BOT token, each BOT token will be priced at $5 initially, and it can be even more. I'm not sure, but I know that the minimum will be $5. So you already have $100 worth of BOT token over there before the launching. And then the 1% withdrawal fees will be given to you daily. Each time people are swapping their token, you'll be getting the 1% from here, which will be shared among this group of people. All right. And then if you're referring to another node holder, you will be getting one time 5%. That means regardless, you are 1,000, you introduce your friend who joined 10,000, you make 5% from the 10,000, which is $500. All right. So this one will be paid one time. Okay. And then for 5,000, also same, they give you 10%. That means your computing power will be 5,500, and they will give you 150 BOT token, and you also get the 1% withdrawal fees charges, and you will be getting one unique physical BOT mining machine, which will be demonstrated in Hong Kong by end of the March on the opening ceremony that we'll be doing. All right, so they'll be doing a demonstration, on the mining machine. And one unit of this miner machine can produce almost about 10 BOT token per day. Okay, that's about $50 per day. So 30 days is already 1,500, yeah? And then for 10,000 node, which is the Genesis node, they'll give you 350 BOT token, which is valued at $5, will be around $1,750. And you will be getting 1.2% from the withdrawal fees, and you will be getting 2 miner box of the BOT miner machine, yeah? So each will produce 10, so you have 2, that means you will get 20 tokens roughly a day, which comes to $100 per day, times 30 days is already 3,000. So can you imagine over here itself, you already collected almost about 50% of the money that you're investing within a month, and you also get the share of 3% from the DOA community, okay, the DAO community, which allocated every day 1,200 CA. You also get the piece of cake from there on a daily basis. All right. So remember, the CA that you're getting, you can either do stacking or you can convert it up to get the BOT, and from BOT you can even channel it out to USDT. Okay, so that's on the node account. Now, last but not least, before I end the presentation for today, let us do some risk assessments on the projects that we used to get involved before this. Correct? In a conventional pairing, you used to see USDT with the platform token, whereby when the liquidity pool goes down, the price of the token automatically goes down, and then there's no way to revive back. It's always a 50-50 chance, either you can make it or you can't make it, right? But with our CaryPact pairing system, we are paired with CA with BOT and BOT with USDT, all right? With the dual token model and also utility token, as I mentioned to you, the programmers who are coming in, they're going to build the ecosystem. Once we have the ecosystem, the users are going to go up. So the more people is going to be holding the BOT and also CA, then we have minimized the risk by 75%. So we are gaining 75%, and the risk is still there, which is 25%. In case the boot token price goes down, the CA goes down, that means the total ecosystem is not working, then we lose the money. But if it's not in that case, if either one is moving or both also is moving, then we are winning 75%
on selecting CaryPact and also bridging. All right. So that's all my presentation for today. Thank you very much for joining our session. I give the floor back to Mr. V to do some summary closer. Thank you. Wow, thank you, brother. Very nice, such a wonderful presentation you given to us. Thank you very much, first of all. Second, दोस्तों, I will just summarize in हिंदी. दोस्तों, बहुत ही सिंपल शब्दों में भाषा में. यस सर, बोलिए. सर, हमारे साथ बोलिए सर. दुबई से मेरे बहुत प्रिय मित्र जुड़े हैं और शहबाज भाई हैं, पाकिस्तान से हमारे प्रिय देश शहबाज अंसारी हैं. बहुत बढ़िया. उनका भी तुम्हें वेलकम सर. दुबई से, पाकिस्तान से, इंडिया से जितने भी आज सभी दिग्गज और लीडर्स आए हैं उन सभी का मैं वेलकम करता हूं और होली की भी बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं. दोस्तों, मैं सिर्फ 5 मिनट में आज की समरी को रखता हूं आपके सामने. हम सभी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में काफी पुराने और काफी अनुभवी लोग हैं, तो आप सभी को 5P पता है. 5P यानी पहला होता है प्रोफाइल के बाद होता है उसका प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्ट यानी प्रोडक्ट, फिर होता है प्लान, फिर होता है उसका पे आउट्स और फिर होता है पर्सनल सपोर्ट. ये 5P के ऊपर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग तो में एक ऐसा प्लान आता है दोस्तों, जहां पे हम एक प्रोफाइल को सच में रियली देख सकते हैं, समझ सकते हैं. देखिए, यहाँ पे कॉइन स्टोर जो टॉप 20 में वर्ल्ड में आता है, बाइनांस के बाद टॉप 20 में कॉइन स्टोर आता है जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ का है. उसके ओनर का नाम है जेसन. वो खुद इस कैरीपैक्ट के ओनर है जो आपको सामने से मिलने जा रहे हैं बैंकॉक के हेड ऑफिस में और सभी लीडर से मिल रहे हैं. वो अगर इतना बड़ा व्यक्ति अगर एक प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी सोच लॉन्ग टर्म की होगी और हमसे ज्यादा ही उसको इस इंडस्ट्री का ज्यादा पता है. क्योंकि आज प्रोडक्ट की बात करूं तो पब्लिक चेन में सिर्फ 8 से 10 प्रोडक्ट में पब्लिक चेन आता है, परंतु क्रिप्टो लाखों में है. जैसे बाइनांस है, जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, फिर उसके बाद आया है इथर ब्लॉकचेन, बाइनांस ब्लॉकचेन, TRX है, सोलोना है, पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है. बस 8 से 10 आपको नाम दिखाई देंगे जो पब्लिक चेन में भी पॉपुलर है. और हर एक पब्लिक चेन जब भी शुरुआत हुआ है वो मात्र 2 साल के अंदर एक अपने पीक पॉइंट पे गया है, यानी पॉपुलर हुआ है. तो कैरीपैक्ट का भी वही फोकस है. तो यहाँ पे खुद का पब्लिक चेन है. पहला तो प्रोफाइल हो गया जहाँ पे हमारे साथ में कॉइन स्टोर के ओनर खुद है और साथ में मल्टा मिलियनियर सैम करके व्यक्ति है जो चाइना से है. वो लोगों का ये प्रोजेक्ट है. ये दोनों सिंगापुरियन है और कॉइन स्टोर तो आपको पता है लीगल में है, एक्सचेंज है तो लीगल है. तो लीगल होने के बावजूद ओनर सामने आया है और इनका प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा है कि जैसे बाइनांस का BNB टोकन है और बाइनांस का ब्लॉकचेन है BNB, तो उसी तरह से यहाँ पे बोट BOHR ये ब्लॉकचेन है, उसका टोकन है बोट. और इसके माध्यम पर ये प्रोडक्ट लोगों को इस तरह से दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम डेवलपर अगर इस बोट पे आते हैं तो गैस फीस इनको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी. अभी ये बोट क्यों यूज होगा, बाइनांस क्यों नहीं करेंगे आगे जाके लोग, क्योंकि देखिए हर एक चीज को एक यूनिकनेस चाहिए रहती है और इन्होंने वही यूनिकनेस लाया है. अगर आपको आज 90% ब्लॉकचेन पे यानी BNB के ब्लॉकचेन पे बने हुए प्रोजेक्ट मिलेंगे, अगर जितने भी प्रोजेक्ट आपके सामने आते हैं, तो वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट अगर नया बनता है तो लगभग महीना भर का समय जाता है, डेवलपर लेता है. हाँ, कॉपी पेस्ट करना है तो कम से कम हफ्ता भर का समय लेता है. पर ये जो बोट है जिसका एक्सेस डेवलपर को यह टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोट का मिलेगा जहाँ पे गैस फीस कम होगी. और सबसे बड़ी बात, बाइनांस या जितने भी पब्लिक चेन की गैस फीस जाती है उनके ओनर के पास जाती है. यहाँ पे जो गैस फीस जनरेट होगी वो डेवलपर को चली जाएगी 80%. तो बहुत सारे डेवलपर उसके लिए भी आएंगे, गैस फीस कम है उसके लिए भी आएंगे. और सबसे बड़ी बात, कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी जो दिमाग में है आपका वो AI के माध्यम से, इस बोट के माध्यम से मात्र 1 घंटे में बनने जा रहा है दोस्तों. यानी दिन में 10-10 प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं भविष्य में. यानी अगर लाखों, आपको भी पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर सही खड़ा होता है तो उसकी कम्युनिटी कम से कम 1000 से 10,000 और लाख लोगों की होती है. तो यहाँ पे
सोच के देखिए, आने वाले 2 साल में 10,000 अगर डेवलपर आ जाते हैं तो एक मल्टी यानी मिलियंस में यहाँ पे यूजर्स आ जाएंगे। बस यही उनकी सोच है। तो ये हो गया उनका प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को देने से मतलब ए टू सी, और जो बीच में होता है ब्रिज, ब्लॉकचेन का ब्रिज, तो ए टू सी और वो सी का ही उल्टा उन्होंने सी रखा है, कैरीपैक्ट। तो कैरीपैक्ट जो टोकन उन्होंने क्रिएट किया है वो कम्युनिटी को लाने के लिए, और बोट उनका खुद का है, ब्लॉकचेन का पब्लिक चेन। तो पब्लिक चेन आप सभी को पता है कि वो कोई सॉफ्टवेयर होता नहीं कि 2 महीने में बन जाता है, 3 महीने में, 2-3 साल लगता है एक पब्लिक चेन बनाने के लिए। उसी तरह से ये बोर्ड बनाने के लिए भी पिछले 2024 से कार्यक्रम चालू था, कामकाज चालू था। तो हमने प्रोफाइल की बात की, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की, अभी आपके पे आउट। दोस्तों देखिए, यहाँ का प्लान और पे आउट जो है, तो ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है, ना कोई वाला कॉन्सेप्ट है। लाइफ टाइम में यहाँ पे एक ही बार हम लोग को कैरीपैक्ट में आना है और यहाँ पे सुपर कंप्यूटिंग पावर को माइनिंग के माध्यम से परचेज करना है। और ये सिर्फ वर्चुअल नहीं है, तो फिजिकल भी है। हमें फिजिकल मशीन भी मिलेगी, जिनको चाहिए वो भी 14 मार्च तक वक्त है आपके पास। हांगकांग में बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें लगभग 5,000 से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। तो प्लान ऐसा है कि सुपर कंप्यूटिंग पावर के लिए इनके जो टोकनोमिक्स है, बोट का टोकनोमिक्स अलग है, जो ट्रेडिशनल है ओपन सोर्स में है वो, और कैरीपैक्ट का टोकनोमिक्स अलग है, जो सिर्फ नेटवर्क के माध्यम से चलेगा, कम्युनिटी के माध्यम से चलेगा। तो यहाँ पे 40%, 2,10,000 इनका 2.10 मिलियन ये टोकनोमिक्स है, इनका फुल्ली सप्लाई है कैरीपैक्ट का। उसका 40% 16,800 इतना एक सुपर कंप्यूटिंग पावर उन्होंने फिक्स रखा है। इनटू आपने कितना यहाँ पे हैश रेट लिया है, 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू 1 हैश रेट है, यानी समझो आपने $1,000 का हैश रेट लिया है, तो $1,000 आपका 1,000 का हैश रेट मिलेगा $1,000 के लिए 1:1 के रेशियो में। तो 16,800, 16,800 इंटू 1000 डिवाइड बाय आज के दिन, मतलब जिस दिन आपने डिपॉजिट किया उस दिन कितने लोगों ने हैश पेयर पूरे कंपनी में खरीदा है, टोटल मिला के, प्रीवियस का भी और करंट का भी, उस तरह से इज इक्वल टू उसका कैलकुलेशन निकलता है। तो शॉर्ट में समझते हैं फिर से एक बार, आपने $1,000 डिपॉजिट किया, 16,800, 16,800 इंटू 1000 डिवाइड बाय 11 मिलियन। अभी 8.5 मिलियन का इनका हैश पावर बन चुका है, क्योंकि उतना नोड का फंडिंग उनके पास आ चुका है। तो मैं 11 मिलियन पकड़ता हूँ। अगर उसका कैलकुलेशन करते हो तो लगभग 15 कैरीपैक्ट टोकन आपको डेली मिलेंगे। 15 कैरीपैक्ट 15 मार्च को ये लिस्टेड होने जा रहा है। 15 मार्च को कैरीपैक्ट का फ्लोर प्राइस होगा $4 से $12 के बीच में। मैं पकड़ता हूँ मिनिमम $4 होगा मिनिमम फ्लोर प्राइस। तो 4 इंटू 4 इंटू 15 करते तो $60 पर डे का आपका अर्निंग हो गया। यानी आने वाले 1 महीने में ये लगभग $1,800 आपको मिल सकता है। पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितना रोज डेली बेसिस पे कैरीपैक्ट में इन्वेस्टर आएंगे माइनिंग पे, जो सुपर कंप्यूटिंग पावर परचेज करेंगे, तो आपको कैरीपैक्ट भी कम आते जाएगा, हर रोज डिक्रीज कैरीपैक्ट होते जाएगा। और जितने लोग आते जाएंगे उसका मतलब ही ये हुआ कि साइड बाय साइड ट्रेडिशनल में बोट का रेट बढ़ रहा है, कैरीपैक्ट का कम्युनिटी बढ़ रहा है, तो टोकन रेट बढ़ेगा कैरीपैक्ट का भी। तो बोट का रेट बढ़ेगा, कैरीपैक्ट का रेट बढ़ेगा, यानी सीए टोकन बढ़ेगा, बोट बढ़ेगा, बोट बढ़ेगा, सीए टोकन बढ़ेगा। ये डुअल इंजन पे काम करेगा। तो आपको पकड़ के चलिए 50 से 60 दिन लगेगा आपको $1,000 आपका रिटर्न आने के लिए, एग्जाम्पल। पर उसके बाद जो भी आएगा वो पूरा का पूरा आपका बोनस होगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रेट टॉप अप नहीं है, कोई 3x 4x नहीं है। आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, वन टाइम सुपर कंप्यूटिंग पावर पर विश्वास रखना है, एक आने वाले ट्रेंड के ऊपर, एक आने वाले नए ब्लॉकचेन के ऊपर आपको अपना सोच रखकर काम करना है, तो आपको बोनस ये लाइफ टाइम मिलेगी। उसके साथ में यहाँ पे डायरेक्ट रैंकिंग इनकम मिलता है। वैसे देखा जाए तो जो सुपर कंप्यूटिंग पावर आपको $60 हमने कहा, उसका सेकंड ऑप्शन आता है जहां पे आप फिर से रिकंपाउंडिंग के लिए 1% के लिए आप डाल सकते हैं, और वो 24 आवर आपका लॉकिंग होगा। हर 24 आवर्स में आप उसको विड्रॉल कर सकते हो, और वो भी फ्लक्चुएटेड होगा। उसका भी एक फॉर्मूला है, वो टेक्निकल सेशन में हम लोग उसको समझ के लेंगे। उसके बाद में हमको समझना है कि यहाँ पे रैंकिंग का इनकम है V1 से लेके V10। यहाँ पे आपका सेल्फ वॉल्यूम जो होगा वो वीकर लेग से होगा, और आपका पर्सनल टॉपअप यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से भी ये रैंकिंग का इनकम मिलेगा।
जो भी विड्रॉल होगा सारा पूरा वो होगा कैरीपैक्ट टोकन में, सीए टोकन में, उसको स्वैप आप करोगे बीओटी वोट टोकन में और फिर स्वैप करोगे उसके पेयर में यूएसडीटी में। ये सारे प्रोसेस में आपको सिर्फ 5% का चार्जेस लगेगा। नोड का अभी यहाँ पे आईडी लगभग लीडर लोगों के डिमांड की वजह से एक्सटेंड किया गया 14 मार्च तक। $1000, 5000 और $10,000 का नोड आईडी है। नोड आईडी पे आप जो आईडी ले रहे हो $1000 को, उसके लिए 10% आपको एक्स्ट्रा मिलता है कंप्यूटिंग पावर, यानी 1000 पे 1100 का कंप्यूटिंग पावर मिलेगा, यानी $60 जहाँ पे आ रहा था वहां पे वो 62 तक जाएगा कैलकुलेशन में। तो इसीलिए नोड लेना है। साथ में नोड लेने से आपको 5% कमीशन मिलता है स्पॉन्सर्ड करते हो तो। फिर आपको ग्लोबली जो गैस फीस जाने वाली थी 80% हमने डेवलपर की जैसे बात की, उसी तरह से कैरीपैक्ट का जितना भी विड्रॉल होगा उसमें से कुछ परसेंटेज नोड ओनर्स को मिलने जा रहे हैं दोस्तों। और 5000 और 10,000 लेते हैं तो 5000 को एक मशीन और 10,000 को 2 मशीन फिजिकली मिलने जा रही है। मैं आप सभी से कहना जरूर चाहूंगा कि हो सके अगर कैपेसिटी है, अगर पूरा विश्वास है ब्लॉकचेन के ऊपर, आने वाले फ्यूचर के ऊपर, और इसको लगता है आपको आपके अनुभव से कि ये सिस्टम बहुत आगे जाएगा, तो माइनिंग मशीन खरीद लीजिए दोस्तों। मुझे पर्सनली उसका कोई फायदा नहीं है। आपने जिसको स्पॉन्सर, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है आपने लिया, तो उनको उसका 5% मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लाइफ टाइम इनकम देने वाला एक सिस्टम बनेगा। ये प्रोजेक्ट क्यों करना है? क्योंकि ये कोई आरवाई का सिस्टम नहीं है, ये पूरा पूरा एजुकेशन और एक्सचेंज का सिस्टम है जो लीगल वे में चलेगा दोस्तों। हम ओपनली मार्केट में काम कर सकते हैं और जो पैसा हमें लाइफ टाइम आ रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसी तरह से अगर हम लोगों ने अगर टीम को क्रिएट किया तो वो टीम के क्रिएशन का भी हमें लाइफ टाइम यहाँ पे टोकन आएगा। टोकन का रेट भविष्य में जो भी होगा दोस्तों, $4 फ्लोर प्राइस से अगर ये 40 जाता है, 400 जाता है, बिन भी जैसा इसका भी हाइप होता है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस डिकेड का होने जा रहा है दोस्तों कैरीपैक्ट। तो ये मुझे जो लगा यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट के ओनर को मिलने का मौका हमें बैंकॉक के हेड ऑफिस में मिलने जा रहा है, जो लगभग 11 मार्च से बैंकॉक का विजिट स्टार्ट होने जा रहा है। 4 डेज का ये विजिट होगा, जहां पे हर इंडिविजुअल व्यक्ति को आने वाले 3 दिन के अंदर पासपोर्ट जमा करना है और $200 जमा करना है, जिसमें $100 का आपको अपना खुद का आईडी टॉपअप हो जाएगा सेम स्ट्रक्चर पर, और $100 कंपनी सर्विस चार्ज के माध्यम से ले रही है, जिसमें वो पिकअप ड्रॉप और ब्रेकफास्ट और कैंसिलेशन फीस इंक्लूड कर रही है दोस्तों। तो जो कुछ है सामने है, और ये $200 बाकी के बाहर के कंट्रीज के लिए पूरा का पूरा उनका वो डिपॉजिट हो जाता है। हमें तो यहाँ पे आईडी भी मिल रही है, तो ये हमारा फायदा है। सोचिए समझिए, कैरीपैक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा है, और आप सभी इसके बारे में थोड़ा और स्टडी कर लीजिए। हम टेक्निकल सेशन और इस तरह का जूम मीटिंग रोज 8 बजे लेने जा रहे हैं बैंकॉक ऑफिस जाने तक। सोच के देखिए, अगर आपके माध्यम से 20, 25, 30 आप जितना लोग आना चाहते हैं आ जाइए, मैक्सिमम लोग आ जाए। मैं कहूंगा अगर जिस दिन अगर ऑफिस में आपका स्ट्रक्चर यानी पूरे के पूरे लोग आपके लीडर्स आपके साथ में आएंगे, तो ऑफिस में विजिट भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा, ओनर से बॉस से मुलाकात भी होगी, एक विजन क्लियर होगा, और फिजिकल मिलने से फायदा होता है, एक बिलीफ बढ़ता है, और काफी हम लोग का वो स्ट्रक्चर प्रॉपर क्रिएट होगा, और पहले दिन से हमारा इनकम भी स्टार्ट होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 15 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग सही समय पर इस मौके को परख रहे हैं। परखना नहीं परखना वो डिपेंड्स करता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि हम सब परख रहे हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ आप सब हमारे साथ में है, और जरूर हम अलग अलग कंट्री से भले ही हो, पर हम नेटवर्कर है, हम एक साथ हम भाई हैं, और जरूर मिलकर बहुत बड़ा हम काम करेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और थैंक यू वेरी मच जसन ब्रदर, एंड थैंक यू टू कैरीपैक्ट होल मैनेजमेंट। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। Yes. Thank you very much, Mr. V, and thank you everybody to join us for the Zoom session, and more things to come in, and see you all in recording Bangkok. stopped. Okay, so until then, I'll see you back again in another Zoom session for tomorrow. Until then, take care. Bye bye. Okay, thank you.